treat you as your family member. देश में तो मैंने सेवा किया काफ़ी, है ना. He will go with you as अदर स्टेट या फॉरेन, है ना. ये सब कुछ जाना इतना ज़रूरी नहीं सोचता हूँ मैं पहले. Good morning from Dalgaon. we have come through this road to arrive at Greenhouse Homestay. This is 600 meters from Dalgaon Playground or the Dalgaon Maidan. We'll just check and let you know how far is the Dalgaon viewpoint, which we'll definitely cover now. And let's see what is in the right. And the safest parking I've ever got in a trip. His own garage. He has lended me to park it. हेलो सर और मैडम, है ना. स्पेशली हैप्पी फिदर डे. र आज का दिन हमारा 59 गोखा राइफल्स जो पाकिस्तान का एक फिलोरा नाम का एक छोटा सा विलेज था, तो वहाँ पे जाके हमारा इंडिया का फोर्स ने एक्चुअली 59 जीआर का जो लोकेशन वहाँ पे उसका डिप्लॉय हुआ था और उसने 1965 में विजेता हासिल किया था. इसलिए आज का दिन बहुत ही बहुमूल्य दिन है और आपका अभी भी मैं विश करना चाहता हूँ स्पेशली हैप्पी फिलोरा डे. If you are coming to Dalgaon, you can stay here. This is Greenhouse Homestay, and Dalgaon viewpoint is only 400 or 500 meters away. If you are coming here, there is so many places you can visit. That is Rongo viewpoint, Dalgaon viewpoint. So many viewpoints are there because you are in lap of nature. What more you can expect? Let's check out the bathroom first. The best bathroom. As I told, it is their own house and they have actually let us stay. This huge credit goes to Samit Das, where we have kept all our gears. Is a double bed, enough for 3 people to sleep easily. And there's a sofa also adjoined. They have immediately welcomed us with chill, cool water of the hills. We are now heading towards Rongo viewpoint. Owner of this homestay, that is Mr. Santosh Chhetri, has booked the vehicle for us and he will come with us also. Hey guys, good morning from Dalgaon. I think we have already wished, and we have got the owner with us, Mr. Santosh Chhetri. नमस्ते. Okay, he has remained an ex-military. The only thing we are wanting is him to tell a bit about himself and why he has opened this homestay, out of what curiosity, what message he want to give to you, our viewers. नमस्ते. संपूर्ण मेरा अपना जो गेस्ट के लिए मैं ये इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ. ये डालगांव में एक छोटा सा विलेज है जो इंडिया का सबसे एंडिंग पॉइंट है. इसका सामने जो भूटान बॉर्डर भी है और आसपास में कोई बाकी बॉर्डर भी है, जैसे यहाँ से नज़दीक चाइना भी है, हवा का रास्ता बनता है ना. और एक्चुअली मैं पहले डिफेंस में सर्विस करता था, तो जब मैं रिटायर होकर आया तो आने के बाद इसलिए मैंने किया है होम स्टे, क्योंकि देश में तो मैंने सेवा किया काफ़ी, है ना. गेस्ट को यहाँ जो भी टूरिस्ट आता है उसका सेवा करने में मेरे को आनंद मिलता है. सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि हमारा वेस्ट बंगाल में बहुत ही जैसे टूरिस्ट लोग बाहर घूमने के लिए जाता है, अदर स्टेट या फॉरेन, है ना. ये सब कुछ जाना इतना ज़रूरी नहीं सोचता हूँ मैं. पहले अपना घर को देखिए, क्योंकि हमारा वेस्ट बंगाल में भी जैसे ये कालिम्पोंग दार्जिलिंग में भी इतना यानी हिडन प्लेस, जो छुपा हुआ जगह, इतना सुंदर जगह है कि वो आने के बाद आपको ऐसा फील होगा हमें कोई लेह लद्दाख, कारगिल
कोई फॉरेन कंट्री जाने का ज़रूरत नहीं, जितना हो सके आप लोग दलगांव या कोई भी अपना स्टेट में पहले घूमिए, अपना घर का देखिए, उसके बाद ही आप लोग बाहर का एक्सपीरियंस लीजिए, उसमें शायद सबका भला होगा। थैंक यू सो मच। The reason that he is telling you to come to his homestay and visit the different places, you can understand the message. So, touring, looking for different people, interacting with other people, this opens your mind, makes you more humble, makes you more, understanding. This is a small message from his side. It's an honor to stay with him, and even the guy that he has brought yesterday, who drove us to Rongo View Resort, you have seen Pranjal. You can see their behavior. It is so beautiful to meet beautiful people, and who has stayed a national hero. He still wants to continue serving the country by inviting people to come, stay, and see. But see your home first before going towards foreign lands and everything that he told. See your home first. बस थैंक यू सो मच, जो आप लोगों ने मेरे को ये जो मौका दिया आज, है ना, तो ये मेरे सबसे ये आज मेरा पेज में रहेगा, इससे बड़ा नसीब शायद किसी काम का मिलता है। तो थैंक यू सो मच सर और मैडम, है ना, इसके लिए स्पेशली आपका अभी भी थैंक्स देना चाहता हूँ। Thank you so much. Thanks to then Samit Das, who recommended us to come here, who absolutely told blindly you can go there, there will be no complaints from our side. So it's great. Please come here, visit this person, get information from him, tour the Rongo, Dalgaon. He will tell you all the routes, whatever is there around. He will go with you as he has come with us yesterday. He will take out time from his busy life. He will be with you. If you treat him as your family member, he is going to treat you differently as a family member. And there is nothing more than a family. Okay. Thank you, sir.